we are now in fact getting breaking news from the Delhi High Court that the death sentence has been upheld by the Delhi High Court. This is the infamous Nirbhaya case, the young woman dying of her injuries nearly a fortnight later in a Singapore hospital. The court had said the crime, which stirred widespread protests over sexual crimes against women in this country, fell into the judicial system's category of rarest of rare, which allowed capital punishment. Now, these four men had filed appeals in the High Court seeking to overturn that death sentence, with the defense arguing that the men had been falsely implicated. The public prosecutor on his part had said society needs a strong message that deviant behavior should not be tolerated, and it seems the Delhi High Court has agreed, has concurred with that, upholding the death sentence in the Nirbhaya case given to the four convicts who are being held at the capital's high security Tihar jail. Tanima joining us at this point from the Delhi High Court. Tanima, take us through what you're hearing. That's right. It was a very short order that the two-judge bench of the High Court here read out. Essentially, they have upheld the trial court verdict, which had awarded death sentence to all the four convicts in the Delhi gang rape case. So, essentially, the portion of the order that the judge read out in front of in the open court was that, for a reason stated in the trial court order, that they are in fact agreeing with the trial court order and are upholding the death sentence given to all the four convicts, namely Akshay Thakur, Vinay, Pawan Sharma and Mukesh Singh. And essentially, what we do know, of course, that the arguments which had taken place in the High Court earlier, towards the end of last year and early this year, before the judgment was reserved, essentially the accused lawyer had claimed that his clients were in fact implicated in a false case, that the dying statement of the victim, the 23-year-old paramedic, was actually doctored by the police. These were some of the claims made by the accused lawyer. But the public prosecutor appearing on behalf of the police essentially maintained that there was strong forensic evidence to convict, which had in fact been produced in front of the trial court to convict the under trials in this case, and also the fact that that a strong message needs to be sent out to the society, and so that such deviant behavior cannot be is not repeated by other criminals. So these were some of the arguments which had taken place at the High Court while this hearing had in fact been on. It was a technicality for the High Court whether or not to uphold the sentence which had been given out by the trial court, whether it upholds or confirms the death sentence rather, or whether it rejects it. So now that the death sentence awarded by the trial court has in fact been upheld by the High Court, the option is of course open for the lawyers of the four accused to file an SLP at the Supreme Court. Right, Tanima, this of course coming more than a year now after the brutal December 16th Delhi gang rape. Tanima, we'll try and come across to you in a moment, but for all those of you just tuning in, the Delhi High Court confirming the death sentence of the four convicts in the Nirbhaya gang rape and murder case. These are Mukesh Singh, Akshay Thakur, Vinay Sharma and Pawan Gupta. Now, the High Court had been hearing the death penalty reference on a day-to-day basis against the convicts. The trial court had, on the 13th of September 2013, awarded the death penalty to these four convicts for raping a 23-year-old woman on a moving bus in South Delhi on the night of December 16th, 2012. The case that really became a turning point in India, given the number of protests that we saw in the days following that brutal gang rape. The victim dying several days later. We're getting more legal reactions. Let's listen. अपील हमारी चारों मुलजिमों अक्षय, विनय शर्मा, पवन और मुकेश की डिसमिस कर दी गई है, और ये फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। हमें दुख है इस बात का, जब इस केस का ट्रायल सेशन कोर्ट में हुआ था
जब इस केस का ट्रायल सेशन कोर्ट में हुआ था उस समय भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव ड्यू थे और आज लोकसभा के चुनाव जब ड्यू हैं तो इस समय ऐसी परिस्थितियों में इसका आपको ऐसा क्यों लगता है इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इससे सरकारें बदल गई। ये ऐसा केस है जिस केस की वजह से दिल्ली की सरकार बदल गई, इसलिए इस केस से सभी डरे हुए और इसका फायदा लेना चाहते हैं। ये सरकार क्यों इस्तेमाल करेगी इस केस को? आप इस तरह की सरकारों ने सदैव राजनीति में इस तरह इस्तेमाल हुआ है और ऐसी बात थी तो इसकी आर्गुमेंट बहुत दिन पहले समाप्त हो चुकी थी। उस समय क्यों नहीं जजमेंट आया? फैसले में क्या कुछ कहा, कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह कुछ आई? अभी डिटेल ऑर्डर हमें नहीं मिला है, बहुत सैकड़ों पेज का है, बहुत लंबा ऑर्डर है। ऐसी स्थिति में जो हमें ऑर्डर मिलेगा हम उस पर जाएंगे और निश्चित रूप से जो ऑर्डर होगा हम उसको देखेंगे। और जो अभी तक ऑर्डर हुआ है में क्या कहा कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि सभी मुलजिमों की जो अपील थी हम लोगों ने डाली थी हाई कोर्ट में वो डिसमिस कर दी गई है और उनकी जो फांसी की सजा थी वो कंफर्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? अब हम इसके अलावा जब हमें ऑर्डर मिलेगा ऑर्डर के अलावा बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने कहा है कि निचले न्यायाधीशों को, जजों को लोगों के खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचले जजों पे दया का भाव होना चाहिए। ना ऑनरेबल हाई कोर्ट में मुझे दया का भाव दिखा, ना ये भाव दिखा कि निचली अदालतों को खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। अब ये देखेंगे इन लोगों ने क्यों नहीं इस बात को मानने पे तैयार है। न्याय के सबसे बड़े मंदिर की देवता की बात जो वहाँ कहते हैं, ये राजनीति से इसलिए प्रेरित है। आपको याद होगा जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए थे तब हमारा ट्रायल का फैसला आया था और आज जब लोकसभा का चुनाव जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, डेट फिक्स हो गई है, तारीखें निश्चित हो गई हैं, उसके बाद जो फैसला 2 महीने से रोका गया था वो आज डिसाइड किया, एकदम डिसाइड किया गया। आप लोगों ये भी सच है कि आप लोगों को पता था कि आज फैसला आना था, किसी को नहीं पता था। सडनली एकदम ये फैसला अनाउंस किया गया। किस दबाव में किया गया मैं नहीं कह सकता। कोर्ट का फैसला राजनीति से कैसे हो सकता है? ये तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला आपको याद होगा साकेत ट्रायल कोर्ट में भी जब विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए उसके बाद फैसला आया और आज ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो इतने दिनों के बाद एकदम एकाएक, आपको भी नहीं पता था, सच्चाई है किसी को नहीं पता था। आपने जो किताब लिखी उसके खिलाफ लोग नारे प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो किताब पढ़ेंगे लोग, दामनी पॉलिटिकल मर्डर, उस किताब में लिखा है, आप लोग पढ़िए, सारी देश की जनता, विश्व के लोग पढ़े इसको। वो पॉलिटिकल मर्डर उसका नाम है, दामनी पॉलिटिकल मर्डर। दामनी की हत्या हो गई, निश्चित तौर पे हत्या हो गई, मैं नहीं कहता, लेकिन उसकी हत्या राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है। और आप दामनी पॉलिटिकल मर्डर देखें।